welcome everyone. Construction safety, and because we were discussing on construction safety, I told that some of the elements are, combination of both the languages because that is to be communicated to the labor class as well. So, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के अंदर ये जो एलिमेंट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जिसके अंदर ये जो एलिमेंट है ये बहुत स्पेसिफिक है एंड दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड देयर कंट्रोल मेजर्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो आइए देखते हैं एंड रादर लेट अस सी व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। आप सब जानते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के 9 एलिमेंट्स, और इसके अंदर आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग करेंगे एलिमेंट नंबर 9 के ऊपर। So the element that we are going to discuss is element 9, and that is on occupational health hazard and their control measures in construction site. So what I have done is that I have divided this in two parts. Why I have divided it into two parts? Because first and foremost thing is that we want to understand what construction safety on under an overview, that how to what we are going to cover in this. So how to introduce a site, what are what are the jobs that are on site or on a construction site, and what type of work is to be done. So that part we'll be covering this time, and in part 2 we'll be covering on the hierarchies of control and everything, correct, and along with the legal overviews as well. So let us start with today's session, and that is first understand occupation in construction work. हमें सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो समझनी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर किस तरह के काम होते हैं, या जॉब प्रोफाइल्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। अब जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो नेचुरली हमारे मन में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि भाई जॉब प्रोफाइल, यस, व्हाट टाइप ऑफ जॉब रोल्स आर देयर। सो देयर आर ऑल इन ऑल 22 different types of job roles on a construction site or in construction work. The first is managerial and supervisor work. Second is plaster, mason, carpenter, roofers, concrete handlers, scaffolders, transport workers, electricians, painters, demolition work, insulation work, roofers, equipment operators, riggers, labor and helpers, steel fixers and erectors, landscapers, pipe fitters, plumbers, tilers, welders, cutters, blasters. So there are these 22 profiles, rather there are these 22 work that happen on any construction site or in construction work. ये जो 22 काम है, ये काम असल मायने में देखा जाए तो ये जॉब रोल्स हैं। तो ये 22 जॉब रोल्स हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये 22 रोल्स होते हैं। अब अगर आपको इन काम को या इन कार्य को अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से बाइफरकेट कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, और उसके बारे में जब हम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो हम उसे भी एक प्रॉपर तरीके से आउटलाइन कर पाएंगे, उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज हैं, so what are the construction activities? When we say that construction sector, so what are the activities? So primarily there are two activities. One is construction activity and one is infrastructure development activity. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज किन्हें कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हर उस एक्टिविटी को कहा जाता है जो कि एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है पब्लिक के रहने के लिए, जहां लोग रहेंगे, जहां लोग काम करेंगे, जैसे कि रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो पीपल, what is construction? So construction activity means where people are gonna stay, where people are going to be staying there, where there will be occupancy of people. So residential and commercial building construction and industrial building construction. So these are two construction activities. Rest all are primarily infrastructure development activities. ये बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज है। रोड्स, रेलवेज,
power generation infrastructure, wind farms, solar power plants, coal fire thermal stations, hydropower electric stations, water facility, waste facilities, and other utilities. All these things are coming under infrastructure development. Now, let us discuss how to introduce a site. See, somebody is coming on your site. How you will introduce your site? This is the most important aspect that you need to understand, and you have to ultimately explain it to people, right? So there are visitors who are going to come in, there are officials who are going to come in, there are going to be, people with of different cadres who are going to come in. So there you must first understand that yes, what I actually need to do. So let us start and understand how you will introduce a site. So whenever, first and foremost thing is, whenever you are introducing the site, so first is you need to explain the very first site introduction. So how you'll start introducing the site? Site has been introduced by taking names for what is the site of or for. Like, this is the so and so construction, we are here for these activities. So you just have to brief on the what is the site, whose site it is, and what activity is on site, like whether it is a construction activity, whether it is an infrastructure development activity. So you have to define the activity part up on in the first introduction part. So the first column covers under site. So what is the site? So the site is for these activities, and this site is construction or infrastructure development project. This is the first information that you need to take, correct? Now you will define the risk. So what is the risk? So it is SRE. So it is site, risk, and emergencies. So you will be explaining the risk now. So when you want to explain the risk, you will be saying activity risk. So what all activities we have discussed before, that these are the activities: construction activities, mason activity, roofing activity, welding activity, all the activities whatever are going to happen, that you need to highlight that these activities are presently going on site, correct? So you will be explaining that these activities are going on the site, and these are the risks associated with the activities, along with where these activities are happening. So you will be also telling them that the risk persists because these activities are going on, and these are the places where you need to go to tell them, to tell, where people are, where is the supervisor cabin, where is the construction cabin, where is the electrical cabin, where is this, all the contractual cabins, where first aid is available, where is the security gate, where is the assembly. So all area based risk and activities you need to define, that okay, this is there, this is there, this is there. So you need to have a simple graph or a photograph, and this introduction should be always given with the area layout in front of you, so that the briefing becomes much easier, correct? Now once you have defined the activities and areas and risk associated with it, then you finally have to conclude your session by speaking about the emergency provision available. Like, you need to tell them that in case of what type of emergencies, because based on the activities, emergencies can happen, and when emergency happens, so this is how we have we are going to address the emergencies, and the assembly point is going to be at this place, and you have to report it to whom. So this is how you primarily introduce a site. So I hope by now I'm keeping this video very short. I hope you like the video. Keep liking and sharing, and now that we have explained it in English, now I'll be explaining it in Hindi as well. So keep liking and sharing if you have seen the video by now, and I'll be explaining it in Hindi. तो किसी भी साइट को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो SRE मतलब साइट, रिस्क और इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए आपको साइट को इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि साइट किस चीज़ का है, क्या ये कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइट है, किस तरह की साइट है, उसको एक्सप्लेन करिए। उसके बाद में आप एक्सप्लेन करेंगे रिस्क। रिस्क मतलब ये एक्टिविटी के अंदर जो एक्टिविटी वहाँ पे चल रही हैं साइट के ऊपर, किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, भैया एक्सकेवेशन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या बिल्डिंग खड़ी हो रही है, या वेल्डिंग की एक्टिविटी चल रही है, या ग्राइंडिंग एक्टिविटी चल रही है, या रूफिंग एक्टिविटी चल रही है। जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके रिस्क आप बताएंगे कि भाई आज यहाँ पे ये एक्टिविटी होने वाली है, या ये एक्टिविटी चल रही है और इसके अंदर ये खतरे हैं।
उसके बाद में आप बताएंगे कि यहाँ पे ये एरिया है, इन एरियाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपने बता दिया कि भाई इस एरिया के अंदर आप ये देखिए, यहाँ पे इसका केबिन है, यहाँ पे ये केबिन है, यहाँ पे ये केबिन है। आपको अगर कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो इन केबिन्स में आके, या इस आदमी से ये जानकारी लीजिए, इस आदमी से ये जानकारी लीजिए, इस आदमी से ये जानकारी लीजिए, एंड देन आप उसको कंक्लूड करिए। और लास्ट में जब आप कंक्लूड करने लगे तो आपको बताना है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, कि भी फर्स्ट एड किट यहाँ पे अवेलेबल है, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे अवेलेबल है, आपके पास में असेंबली पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इमरजेंसी का कोई भी सलाम रिंग होता है तो आपके जो कंसर्न एसोसिएट हैं या जो भी आप जिनसे आप मिलने के लिए आए हैं उन्हें रिपोर्ट करिए और उनके साथ में आप असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा हो जाइए। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है अपने काम को इंट्रोड्यूस करना या अपनी साइट को इंट्रोड्यूस करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो लाइक और शेयर का बटन तब क्या होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, we'll be posting more such videos, and please do wait for the part 2 of this session where we'll be discussing on the hierarchy. And till then, keep liking and sharing, and do not forget to subscribe our channel for our own motivation. Thank you very much friends, thank you so much.